صاحب سے کہ تشریف لائیں اسٹیج پر اپنی نشست سنبھالیں. مولانا محمد نذیر فاروقی صاحب. اس کے بعد میں درخواست کروں گا جمعیت علماء برطانیہ کے سرپرست اعلیٰ صدر پریسیڈنٹ جناب مفتی محمد اسلم صاحب سے تشریف لائیں اور نشست سنبھالیں. مفتی محمد اسلم صاحب. اس کے بعد میں درخواست کروں گا الحبیب ویلفیئر فاؤنڈیشن جو پہلی دفعہ اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر متعارف کرانے کے لیے آج اس چیریٹی ڈنر کا اہتمام کر رہی ہے، اس کے منتظم اور روح رواں اس ملک کے اندر جناب مولانا محمد اسلم داعش صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنی نشست سنبھالیں. زندہ قوموں کی نشانیوں میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اپنے پیشواؤں کو نہیں بھولتے ہیں، ان کے اسباق کو یاد رکھتے ہیں، عملی جمع بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نوجوانوں کی بھی تربیت کرتے رہتے ہیں. لہٰذا یہاں پر میری ذمہ داری اب ختم ہوتی ہے. شام میں کسی وقت میں بعد میں کسی ذمہ داری کے تو حاضر ہوں گا اور ایک نوجوان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج شام کی نظامت سنبھالیں. محمد زاہد صاحب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور آج کی شام کو کنڈکٹ کریں. Assalamu alaikum. Welcome to Alhabib Welfare Foundation Charity Dinner. Thank you very much all of you for attending. Unfortunately, our main guest who was supposed to arrive, Maulana Fazlur Rahman, couldn't make it today. And before anybody asks, no, you can't get a refund on your tickets. But we've got lots of other amazing guests lined up for you to do some talks. So I'll start off by calling Qari Hamad, who's going to recite some verses from the Holy Quran, and straight after that, if Mahmoud Zaid can come on and do the translation of those verses, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق الله العظيم. I seek refuge in Allah from the cursed devil. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Those who spend their wealth for the cause of Allah and afterwards make not reproach and injury to follow that which they have spent, their reward is with their Lord, and there shall no fear come upon them, neither shall they grieve. A kind word with forgiveness is better than almsgiving followed by injury. Allah is absolute, clement. O you who believe, render not vain your almsgiving by reproach and injury, like him who spendeth his wealth on to be seen of men, and believeth not in Allah and the last day. His likeness is the likeness of a rock, whereon is dust of earth. A rainstorm smiteth it, leaving it smooth and bare. They have no control of aught of that which they have gained. Allah guideth not the disbelieving folk. That was Qari Muhammad who recited some verses from the Holy Quran which emphasize the importance of charity, and Mahmoud who translated those verses. Next, I'd like to call Maulana Qari Mumtaz to recite Naat. نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں فرشتے سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں اور یہ جہاں چیز ہے کیا خود خدا بھی ہے ثنا قرآن پاک کے پارے درود پڑھتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نعتیہ کلام ہے ابھی گیلانی مرحوم کا. بجا تم نے کہا وہ گنبد احزر میں رہتے ہیں. بجا تم نے کہا وہ گنبد احزر میں رہتے ہیں. بجا تم نے کہا وہ گنبد
गुंबदे अहज़र में रहते हैं, मगर जलवे तो उनके मेरी चश्मे तर में रहते हैं, मगर जलवे तो उनके मेरी चश्मे तर में रहते हैं। और शफक में कहकशा में चांद में सूरज में, शफक में कहकशा में चांद में सूरज में, नजर वाले ये कहते हैं कि वो हर मंजर में रहते हैं, नजर वाले ये कहते हैं कि वो हर मंजर में रहते हैं। और जहां हूँ राबते दिल के वहां दूरी नहीं होती, और जहां हूँ दिल के राबते वहां दूरी नहीं रहती। गर्चे वो मदीने में हम अपने घर में रहते हैं, गर्चे वो मदीने में हम अपने घर में रहते हैं, मगर फिर भी दिल उनका नाम ले ले कर तड़पता है, मगर फिर भी दिल उनका नाम ले ले कर तड़पता है। यकीन है तभी यकीन है कि वो मेरे दिले मुज़तर में रहते हैं, तभी यकीन है कि वो मेरे दिले मुज़तर में रहते हैं। और जहां रहते हैं आका हाँ यकीनन वो बाग जन्नत है, वो अम्मा आयशा के हुजराए अतहर में रहते हैं। और मिसाली है अबू बकर उमर से दोस्ती उनकी, वो उनके बर में रहते थे, वो उनके घर में रहते हैं, वो उनके बर में रहते थे, वो उनके घर में रहते हैं। वो शाहों का शाह दिलबर, उसका कूचाए शाही। और बड़े खुशबख्त हैं जो कूचाए दिलबर में रहते हैं। बजा तुमने कहा वो गुंबदे अहज़र में रहते हैं, मगर जलवे तो उनके मेरी चश्मे तर में रहते हैं। MashaAllah, what a beautiful now. Next, I'm going to give you a short presentation about Alhabib Welfare Foundation. Okay, so I'm just going to give you a short presentation about Alhabib Welfare Foundation. Alhabib Welfare Foundation was founded by Maulana Muhammad Aslam Zaid, who is the Vice Chairman of Jamiyat Ulama Britain. It was founded by Maulana Muhammad Aslam Zaid, who is the Vice Chairman of Jamiyat Ulama Britain and Khatib of Usmania Education Centre. Alhabib Welfare Foundation is a small charity. It's run solely by volunteers. 100% of donations are given to the needy and no salaries are taken whatsoever. It's completely run by volunteers. And all of Alhabib Welfare Foundation's work is very transparent. Why did Alhabib Welfare Foundation begin? Well, for some years, friends of Maulana Muhammad Aslam Zaid regularly asked him to pass their zakat and sadaqah on to needy people in remote parts of Azad Kashmir, which weren't very easily accessible, and those people weren't receiving much support from any of the charities. So Maulana, through his personal visits
and with the help of people on the ground there who he knew, was able to give these needy people and hand over the amounts according to the criteria that they had given to him. So in 2005, AWF was started, and we started it to respond to the increasing needs of victims of the 2005 earthquake. Since then, AWF has been raising money for various projects, mainly to cater for the needs of the orphans, widows and other sufferers of that 2005 earthquake. In 2010, AWF was formalised and we registered it as a charity here in the UK. Where does AWF operate? Mainly in the remote villages located around Barg. Most of you won't know those villages listed there. I'm sure most of you probably heard of Barg, which was really badly affected by the earthquake of 2005. But there's a lot of remote villages around Barg which we focus on at the moment. Now, the needy families in those villages are living in poverty, they're extremely poor, and the average monthly income per family in those villages is about 5,000 rupees, and most of them are unemployed as it happens anyway. So what current projects are Alhabib Welfare Foundation working on? We sponsor the upbringing and education of orphans. We encourage and support widows to earn a living, help needy families through one-off donations or regular donations for those families that are literally stuck in poverty and can't work their way out of that poverty. And we also provide free basic and religious education facilities which are accessible locally to children in those villages. If you want more information of any of these projects, you can visit our website, which is www.alhabibwelfarefoundation.co.uk. I'll tell you a little bit about each of these projects. We help orphans in a number of different ways. One is to provide new clothes to orphans throughout the year, but particularly on Eid. We sponsor orphans' education. This might be buying new books or their Islamic education, as well as their living costs. At the moment, the needs of over 30 orphans are being catered for and basically sponsored. And we have more requests from orphans around those villages. We help widows by encouraging and supporting widows to earn a living. A few months back, over 6 months back actually, we had a sewing machine project in which we provided approximately 50 sewing machines to widows around Barg and in Azad Kashmir, around those villages. And since then we've had a lot more requests from other widows which would like to gain some sewing machines. Education centres, we run one education centre in each of those villages which provides free basic and religious education facilities for those children locally, so they don't have to travel a number of miles to get to the main masjid. And for that reason, many of those children weren't getting any basic Islamic education at all. Now, by doing this, we also provide income for locally recruited teachers in those villages, which are monitored by Alhabib. The future projects that we're looking to do are, first of all, to enhance the current projects and make them better in any way that we receive any suggestions to do so. But other future projects, we're thinking of setting up a local medical facility which can be used for quick response to small minor injuries, or just to provide medicine so that villagers don't have to travel very far to get basic medicine. We'd really like to acquire a ambulance or a few ambulances to facilitate transporting patients to the hospital in emergencies, because at the moment
there isn't any such facility. There's no sort of 999 facility or anything like that. And in emergencies, the only thing that one can do is to find the nearest person that has a car, and there aren't many people that have a car in those villages, and then arrange for that person with a car to take the injured person to hospital. And this can take a long time depending on how easy it is to find someone with a car. So that would be really beneficial, we believe. For further information on any of these projects, please approach any of the volunteers this evening or later on. We'd really love to hear your suggestions or any questions that you may have, which you can do so just by going on our website and just posting it through there. And we'll endeavour to respond to those questions or suggestions as soon as possible. If you'd like to make any donations, you can also visit our website, or you can do that directly through Maulana Muhammad Aslam Zaid. Thank you for listening. Me again. Now I'd like to call Maulana Muhammad Aslam Zaid to do a short presentation in Urdu about Alhabib Welfare Foundation. Maulana Muhammad Aslam Zaid. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسن كما أحسن الله إليك وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أحسن كما أحسن الله إليك احسان کرو جس طرح اللہ نے آپ پر احسان کیا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں. میرے انتہائی قابل احترام مہمان خصوصی حضرت مولانا نذیر فاروقی صاحب، صاحب صدر حضرت مفتی اسلم صاحب، میرے دیگر معزز علماء کرام حضرت مولانا رضا الحق صاحب، حضرت میرے قائد حضرت مولانا عبدالشکر ربانی صاحب، حضرت مولانا قاری اسماعیل صاحب اور حضرت مولانا قاری ممتاز صاحب اور دیگر علماء کرام اور میرے انتہائی قابل احترام مہمان اور میری بہنوں بچیوں، میں آپ کو انتہائی جو ہے مسرت سے خوش آمدید کہتا ہوں. یہ الحبیب ویلفیئر فاؤنڈیشن کا پہلا چیریٹی ڈنر جس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے آپ کو جو دعوت نامہ کارڈ ملا اس میں مہمان خصوصی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے امیر اور کشمیری کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کو جو ہے بنایا گیا اور آپ کو ان کے نام کے حوالے سے دعوت نامہ ملا ہے. لیکن یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان میں جو حالات جلدی تبدیلی اس میں آئی تو مولانا برطانیہ بھی نہیں تشریف لا سکے اپنی وہاں کی مصروفیات کی وجہ سے، ورنہ چونکہ ہماری جماعت ان کی میزبان ہوتی ہے اور یہ جماعت کے ساتھ طے تھا کہ اس پروگرام میں مولانا ہر صورت میں تشریف لائیں گے، لیکن چونکہ ان کی اپنی وہاں کے حالات کی مجبوری کی وجہ سے مولانا نہیں تشریف لا سکے، تو اس لیے آج مولانا یہاں نہیں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے حالات ہیں جس کی وجہ سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ آج یہاں نہیں ہے اور آپ ان کو دیکھ اور سن نہیں پائے. انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ہم دوسرا ایسا کوئی پروگرام ترتیب دیں گے جس میں آپ سنیں گے ان کو. اس حوالے سے جو ہمارا الحبیب ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو کام ہے، میں نے جو آیتیں تلاوت کی دونوں، ایک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احسان کریں جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہیں جو تقوی اختیار کریں اور ان کے ساتھ ہیں جو احسان کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی اس قابل ہو کہ وہ کسی پہ احسان کر سکے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے تم پر احسان کیا تم دوسروں پر احسان کرو. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اس قابل ہو کہ وہ احسان کر سکے دوسرے پر اور دوسرے کے ساتھ نیکی کر سکے، اس کے کام آ سکے، اس کی مدد کر سکے. دیکھیں جنت میں سب برابر ہوں گے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، ہر ایک کو اتنا اللہ تعالیٰ دیں گے کہ کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ کسی دوسرے سے کہے. لیکن یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ کسی کو زیادہ وسائل دیے، کسی کو کم دیے، اور اس میں امتحان بھی ہے ہمارے لیے. اور اللہ تعالیٰ اس طرح بندوں کو دیکھتے ہیں اور بندیوں کو دیکھتے ہیں کہ کون اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں اور ان کے نام پر وہ دیتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں. اور اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست بات کی کہ جیسے تم پر اللہ نے احسان کیا احسان کرو، اور دوسری آیت میں کہا کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کر
फिर हमें ये हुक्म दिया कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, और अल्लाह ताला का कहने का अंदाज खुदा की शायान शान है, जैसी उसकी ज़ात है उसकी बात का अंदाज भी निराला है। एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ताला ने ईमान वालों से उनकी जानों और मालों को जन्नत के बदले में खरीद लिया। तो अल्लाह ने हमें दिया, देने के बाद अल्लाह कहते हैं मुझे बेचो और इसके बदले में मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। और इसी आयत में आगे अल्लाह फरमाते हैं फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बि व ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, खुश हो जाओ इस कारोबार पर, इस सौदे पर जो तुमने मुझसे किया, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो अल्लाह ताला का अंदाज देखें, उसकी बात भी उसकी ज़ात की तरह है कि अल्लाह ताला हमें देकर कहते हैं मेरे रास्ते में खर्च करो और इसके बदले में जन्नत में तुम्हें दूंगा। और फरमाया कि ये बड़ा अच्छा कारोबार तुमने किया और ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो इस तरह खर्च करते हैं। इसी तरह दूसरी जगह आप देखें एक और अंदाज है अल्लाह ताला का, हमें जब आप अपने रास्ते में अल्लाह ताला खर्च करने का कहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़ाफ़न कसीरा, कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, अच्छी तरह कर्ज देना, फिर अल्लाह ताला उसको बढ़ा चढ़ा कर दे, बहुत ज़्यादा बढ़ाना उस कर्ज का बदला। तो ये देकर अल्लाह ताला हमें कहते हैं कि मुझे कर्ज दो, और कौन है जो दे, मैं बढ़ा चढ़ा कर उसको वापस करूंगा। और इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बहुत फजीलतें हमें बताई कि सबसे बड़ी जब अल्लाह के रास्ते में आदमी कहीं खर्च करता है, नेकी के कामों में खर्च करता है, तो आदमी के जहन में ये बात आती है कि इतनी मेहनत से जो माल मैंने कमाया है, जमा किया है, ये कम हो जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल्लाहि मा नक़स मालु अब्दिन मिन सदक़तिन, अल्लाह के कसम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से कम नहीं होता। ये बात हमारे मुशाहिदे के खिलाफ है, देखने में तो कम होता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कम नहीं होता। और अल्लाह की कसम उठाकर आपने फरमाया कम नहीं होता। हमारे लाखों लोग देखें वो गलत हो सकता है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो बिल्कुल सही है। उसमें जो बरकतें आती हैं, जो रहमतें आती हैं, जो कामयाबियाँ आती हैं, जो अल्लाह की तरफ से इनामात आते हैं, जो हिफाजत मिलती है, वो इतनी ज़्यादा होती है कि इससे बढ़ता है, कम नहीं होता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हमें ये बात बताई। अलहबीब के हवाले से, जैसे अभी मोहम्मद से आप सुन रहे थे, पहले ही जब से मैं यहाँ शफील में हूँ, आप लोग मुझे जानते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो ज़ाती तौर पर मुझ पे एतमाद करते थे और अपने सदक़ात और खैरात बहुत सारे लोग मेरे ज़रिए से ज़रूरतमंदों तक भेजते रहते थे। लेकिन 2005 में जब ज़लज़ला आया तो मेरा चूँकि बाग से ताल्लुक़ है, बाग के भी एक ऐसे गाँव से जो बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक है, इंतहाई पसमानदा इलाका, जहाँ बहुत जो है मुश्किल से लोग पहुँचते हैं और पैदल सफ़र और सारा ये साथ वो इलाके सारे तबाह हो गए और बाग बिल्कुल जो है तबाह और बर्बाद शहर में एक था 2005 के ज़लज़ले में। उधर मेरा राब्ता बिल्कुल, जब मैंने देखा कि ये हालात हैं तो मैं राब्ता करने की सबसे कोशिश करता, कोई फ़ोन जो है ना मोबाइल काम करता था ना दूसरा फ़ोन। सबसे पहले जिससे मेरी बात हुई मेरे चचेदार भाई थे और उन्होंने मुझे ये कहा कि यहाँ ये हालत है कि जनाजे इतने पड़े हुए उठाने वाला कोई नहीं है। और उन्होंने मुझे कहा कि हम पानी से रोज़ा रखते हैं और जो दरख्तों के कुछ फल हैं उनसे इफ्तार करते हैं। ये पैगाम जो मैंने उनसे लिया, मैंने जामिया मस्जिद उस्मानिया एजुकेशन सेंटर में, जामिया मस्जिद इंडस्ट्री रोड, मस्जिद उमर और जामिया मस्जिद चकलवा गरादरम, अपने रुफ़ाका उलमा, इनके साथ ये पैगाम मैंने इन तक पहुँचाया। और अल्लाह ताला आप हजरात को जज़ा दे, तकरीबन 30,000 पाउंड से ज़्यादा रकम जमा होगी। और यहाँ मेरे दोस्त जो है रेडियो रमज़ान भी काम कर रहा था, हर दीनी काम में मेरे साथ हमेशा खड़े रहे, मोहतरम जाम शबीर मूर साहब, सैयद साहब, इनसे मशवरा हुआ और इन्होंने ये कहा मुझे कि जो भी पैसा है सीधा पहुँचाते जाएं, या कोई एक दिन के लिए भी आप न रखें। और ये सिलसिला हमने इसी तरह जारी रखा और बहुत ज़्यादा वहाँ खाने पीने के लिए उन गाँव में, उन देहातों में लोगों को हमने सामान दिया कि जहाँ और कोई चार चीज़ नहीं पहुँचती थी और लोगों के वहाँ पहुँचने का कोई ज़रिया नहीं था। और इधर वो हालात थे, लोग बिल्कुल इसी तरह हालत में थे और यहाँ लोगों का इतना भरपूर तामन था कि हमारे सोच से भी ज़्यादा। और ये अमानत थी आपकी मुझ तक और मेरी जो है आगे लोगों तक, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी आपकी अमानत जो है जैसे हमारे तक आए हम आगे पहुँचाते रहे और ये सिलसिला इस तरह चलता रहा। फिर ये सिलसिला चूँकि वहाँ के हालात भी इसी तरह थे, अब ज़ाहिर बात है लोगों की तबाही बर्बादी हो गई, ज़लज़ला आ गया। उसके बाद जो है कुछ लोग वहाँ पहुँचे, मदद की शहरों तक, देहातों तक बिल्कुल बहुत कम लोग गए और लोग नहीं जाते थे। लेकिन फिर उसके असरात
बाकी थे कि बहुत सारे लोग शहीद हो गए, उनकी बच्चियां हैं यतीम, उनके बेवाएं हैं, इसी तरह कुछ लोग माजूर हो गए। और ये सिलसिला इस किस्म का था, जब उन्हें पता चला हम मदद करते हैं तो लोग हमसे रब्ता करते थे। फ़ोन भी हमारा हम हर एक के पास था और मेरे घर में और मेरे मोबाइल में लोग फ़ोन करते थे। और इधर आप हजरात का तावन रहा, तो हमने गुज़श्ता साल जो है अलहबीब वेलफेयर फाउंडेशन को यहाँ चैरिटी रजिस्टर किया है और इस हवाले से हम ये काम कर रहे हैं। अभी हमारी जो है बुनियादी जो हमने जिसको ज़्यादा अहमियत दी है, ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वो हमारे सबसे ज़्यादा जो है यतीम बच्चियाँ हैं, जिनके लिए हम और यतीम बच्चे इनके लिए तालीमी कोई स्पॉन्सर करे उन्हें, या उनके लिए जो है कोई कफालत उनकी फैमिली की स्पॉन्सर करे, तो इस पर हम काम करते हैं। इसके अलावा बेवाओं और